हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आप सभी को एक कंसेप्ट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच यूजफुल इन मैनेजमेंट। In practical life also you'll see that management by objective is very much important and very much useful. Its application is very wide, and day to day if you do it, you will see that its result is coming from the day one, and it's my guarantee, I can tell you. I have got a lot of experience. So here you see, what is management by objective? What does it mean? It means that is a management approach where managers and employees jointly set clear, measurable goals, and performance is evaluated based on how well those goals are achieved. Means what? This target, what we call target phobia is there, no, in sales, in all the departments. Some target is there, and this target is making a lot of havoc. Month is going to be over, what should I do? Nothing is done. We have not achieved. All this thing will go away from you. So the top management of many this companies which are leaders in the market, they have adopted this. What is that? The goal is, I mean, it is decided by not only by the top management but with the employees. Employees और जो मैनेजर्स हैं दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि क्या गोल होगा, और ये मेजरेबल होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए, और इसका परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट होना चाहिए। तो कैसे होगा? हम्म तो लेट अस सी दैट इसके क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर यह है कि इट शुड बी अलाइन टू द गोल। मेन गोल हमारा क्या है? हम्म? हमारा मेन गोल है टारगेट अचीव करना। तो क्या, सपोज वन कंपनी इज देयर लाइक महिंद्रा, दे वांट टू अचीव सम 3,60,000 tractors in 1 year. So Mahindra company, if they want to achieve the target of 3,60,000, that is 360,000 tractors sale in 1 year, so that should be the target of the managing director, as well as the regional managers, as well as the area managers, as well as the down the line, that executives, salesmen, everyone. It is not so. So it is divided. That's right. It is divided. Already it is there. But what is that goal of a sales executive? What is that goal of an area manager? What is that goal of regional manager? What is that goal of managing director or sales head or whoever is there? So everyone will have different thing, and if it is divided properly, suppose in one particular territory, four sales managers are there, and all have got different teams, and each team member is given some particular responsibility. So if each of them achieve, then the manager will achieve in that particular territory. सो कैसे उसको डिफाइन करें? अगर हमें कुछ 10 सीढ़ियाँ चढ़नी है तो हर सीढ़ी को अच्छे से डिफाइन करना होगा। इट इज़ नॉट दैट एवरी वन विल हैव टू अप्लाई एफर्ट इन वन डायरेक्शन ओनली। डायरेक्शन है कि हमें अचीव करना है टारगेट, लेकिन हमारा आज के दिन में क्या काम है उसमें पहुंचने के लिए। सो दैट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। उसको कैसे डिफाइन करें? तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का क्या है? उसका रोल लीड लीड को एकत्र करना, मतलब टू अचीव द नंबर ऑफ लीड्स। लीड ऑफ मीन्स दैट इज इंक्वायरीज। हाउ मेनी इंक्वायरीज यू आर getting day by day, every day, how much you are getting, how to increase that, how to get the growth. Then some persons should be there who can mature the sale. How to mature the sale? उसको कैसे हम कन्वर्ट करें सेल्स में? वन पर्सन
is assigned to convert that. One person is there in the support function. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, that one customer is there, he has to buy the tractor. For sales executive, he needs that inquiry to whom he should touch. The call center or a person, he is doing all that, connecting with the people and seeing whether they are warm, hot, or cold. Based on that, this information is given to the sales executive. Then sales executive take decision where should he attack, कहाँ पे जाना है. तो उसको अगर ये मालूम हो कि हमें इन सभी हॉट कस्टमर को आज टच करने, एंड ऑन द वे ही कैन ऑल्सो टच सम वार्म कस्टमर और कोल्ड कस्टमर. तो अगर ये बिल्कुल क्लियर है तो वो काम करेगा. मैनेजर का क्या काम होगा कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें और उसके लिए ज़्यादा ज़्यादा इंक्वायरीज हो और खर्च कम हो, है ना, दैट टू मिनिमाइज द कॉस्ट. And above that, regional manager, he has to see a wider area and in the very macro level, that is how to increase the yield of the employees. उनका कैसे हम मोटिवेशन लेवल ऊपर करें, and more I can get the lead and I can convert the lead into sales and to improve the turnover in that particular area. एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या होगा और सेल्स हेड का क्या होगा कि हाउ टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ टू इंक्रीज द टोटल टर्नओवर, हाउ टू बिकम कंटिन्यूइंग दिस लीडरशिप इन द मार्केट. तो सबके अलग अलग गोल होंगे, सबका अलग अलग काम होगा, सर्विस फंक्शन अलग होगा, अकाउंट्स वाले अलग काम करेंगे, तो सपोर्ट फंक्शन का अलग काम होगा. सो ऑल दीज पीपुल शुड बी डिफाइंड इन ए वेरी नीटली, इन ए वेरी क्लियर वे. देन ओनली दैट अलाइंड गोल विल बी अचीव्ड. तो इसमें एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होता है. एम्प्लॉयज हेल्प सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव. सपोज इफ यू आर इन्वॉल्व इन दैट setting the goal, what will happen? It will be very clear to you because you have only set. The manager has just finely tuned it. हो सकता है थोड़ा बढ़ा भी दे, नो प्रॉब्लम, बट इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको इतने लोगों से मिलना है और इसको कन्वर्ट करना है और इसमें आपको क्या हेल्प चाहिए आप बताओ, और हेल्प करने वाले खड़े हैं. तो इट इज़ वेरी मच क्लियर एंड इट इज़ वेरी मेजरेबल. ये मेजरेबल है, यू कैन मेजर इट कि हमने ये टारगेट किया था तो हमने ये किया. इट इज़ नॉट ओनली दैट फाइनल यील्ड, बट इतने लोगों को हम मिले थे, मे बी कन्वर्टेड, मे बी इट कुछ आगे पीछे हो सकता है. वी माइट हैव थॉट ऑफ कन्वर्टिंग 30%, यू हैव डन इट 10%, 15%, लाइक दैट. परफॉर्मेंस रिव्यू भी ईजी है. यू कैन ओनली टेल that how much you have achieved and what you have done. Is it justified, that review? Feedback and control. So it will be very easy. Before asking the manager, employee can only tell that, okay, this was the achievement, this because of this reason I could not do that. So feedback मैनेजर से ज़्यादा तो एम्प्लॉय खुद देगा, है ना. सो इन दिस स्टेप फर्स्ट थिंग डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल. हमें जाना कहाँ है, दैट यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट. Unless and until you decide it, it is very difficult. You are at the entry level, and if you decide to go to become a leader in 1 year, is it possible? No. तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए गोल. और इन ए पर्टिकुलर टेरिटरी, सपोज माइक्रो लेवल में अगर देखना है तो इन ए पर्टिकुलर टेरिटरी आप किस लेवल में है, वहाँ पर कौन ज़्यादा डोमिनेट करता है. इन स्पेशली इन ट्रैक्टर इंडस्ट्री, whether financiers are there believing in you or not, are you giving good customers to them or not, are you able to get the loans cleared by the customer or not, what kind of customer, quality of customer क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, ये बहुत ज़रूरी है. सेट इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव. सो ये भी बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, सर्विस डिपार्टमेंट का, उनका क्या अचीवमेंट होना चाहिए, क्या उनका गोल होना चाहिए
पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया के लिए भी डिफाइन होना चाहिए, मैक्रो लेवल पे भी होना चाहिए, माइक्रो लेवल पे भी होना चाहिए। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, हाउ टू मॉनिटर इट। अगर आप सर्विस में बोलोगे किसको कैसे मॉनिटर करेंगे? सो सपोज इट इज नॉट दैट ओनली नंबर्स, sales people are selling 100 tractors suppose in a particular period, but they have already the existing customer. So have they met them, have they given proper service to the old customer or not? That also should be there. तो वो हमें बहुत ही क्लियरली डिफाइन करना होगा, इसको मॉनिटर करना इजी है तब। एंड देन इवेल्युएट परफॉर्मेंस। so for evaluation also you should have some standard, some steps for that. Key in this, suppose you are in sales, so not only the quantity, but how many people you have contacted, what this activity you have asked for, what support you needed, whether you asked for that or not. So, not only that, selling is your work. Your work is also to do some publicity for that what you did. Did you able to get the support from the support functions? Publicity, you may not be your area of, scope, but it is योर ड्यूटी टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम द सपोर्ट फंक्शन। ये भी आपकी ड्यूटी है। तो कैसे उनको पता चलेगा आपको क्या समस्या है? अगर आप अपनी समस्या को बताओगे तभी तो वो सपोर्ट फंक्शन आपके पास आएंगे। एंड प्रोवाइड फीडबैक एंड रिवॉर्ड्स, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप ऑफ दिस। इफ यू प्रोवाइड फीडबैक डे to your employees, managers are giving feedback to your employees, and when employees are giving feedback from the field to the manager, both the things are required. So then the decision can be taken very fast, and rewards should be given. Your accountability should be judged. If it is judged and in a very short period, monthly, quarterly, half yearly, annually, all that reward should be given. If your accountability is published, you will be motivated always. सो इसका एडवांटेजेस क्या है? इसका एडवांटेजेस है कि इट गिव्स मोटिवेशन एंड मेक यू कमिटेड, है ना? आप में कमिटमेंट लेवल बढ़ता है। क्लैरिफाइज रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल आपका क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर आपका गोल क्लियर होता है, और आपका एक्सपेक्टेशन भी बहुत ही क्लियर होता है। और वट एवर क्लैरिफिकेशन इज देयर, दैट यू कैन have this conversation with your seniors, and you can clarify also. Enhances performance measurement. So measurement बहुत easy है. If it is defined completely, each and every activity, very small activity, then it is very easy to measure. Hmm? So performance measurement is also very easy. Encourages accountability, and your accountability is also very much making very much keep you motivated. If whatever you do, whatever you achieve, you are given proper reward, or your name is published in magazine or in some wall of fame or something like that, in the on the wall of the notice board, then you will always be motivated. It encourages you. But some people say there are disadvantages. If it is not required this much, why should you do? It is time consuming to implement. But that is the manager's duty. Whether MBO is required there or not, that you have to decide. But most of the places it is required, most of the places. Overemphasis on measurable goals. So everything, if you want to quantify, it is very difficult, no? But overemphasis, it is really disadvantages. So people will have lot of panic and havoc, that why, what will happen if it will doesn't happen, if I not able to achieve. So this kind of thing can happen. Can neglect qualitative factors like teamwork, creativity. It can happen. It can happen because ultimately the manager is seeing the numbers,
and it is not coming in any measurable quantity. Hmm? And then you may get um, lesser marks or lesser this rating, so you will get demotivated. But these are the disadvantages by doing over, means over emphasis of that. Not always, not always. Requires a strong communication skill. Yes, very good skill is required. That is an disadvantage. Some people are saying it is disadvantage, but it is a part of the advantage only, I can say. If it requires, then you should have the better communication skill. No, so these are disadvantages, but these are not so, I mean, dominating compared to the advantages. So advantages part are more than the disadvantages. So time consuming, if you say everything is time consuming, so you should not do. No, time consuming is there, but it is improving your efficiency. Overemphasis of measurable goal, okay, it is there, but it is not that every time manager is asking you that why not it has happened, why not. You are also involved in the measuring, I mean, in the making of the goal. So you yourself will think all that. Okay, so all these things, in spite of that, that it is very much useful and it is used very widely all over the world. Thank you very much. So once again, I will bring one new topic, mean very much relevant to you. बहुत जल्दी मैं आऊँगा वन मोर क्लास के साथ. आपको ये कैसा लगा, प्लीज मस्ट राइट इन द फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.